तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक देख लिया था जो कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे थे periodic classification of the elements. So we have seen that classification of the elements up to 1800 there were the 30 elements were known. तो डोबेराइनर आए। डोबेराइनर ने ट्राई किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, एंड उन्होंने एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस को यूज किया, and he made the classification on the basis of the triad. So he has taken the three elements in which he told that the sum mean of the extreme two elements is equals to the mean of the atomic mass of the middle element. तो फिर बाद में ये जो डोबेराइनर थे तो उनका एक ड्रॉबैक निकला कि however all the known elements could not be classified into डोबेराइनर ट्रायड. सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड आए। तो न्यूलैंड ने ट्राई किया एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑक्टेट. So he said that every eighth element had showing the property similar to those of the first. This was the law of octave which was given by the Newland. तो इनके इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया। दे हैव सो ये कैल्शियम जो एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट तक क्लासिफिकेशन प्रॉपर कर पाए। बाद में जो एलिमेंट थे तो उनके लिए वो प्रॉपर्टीज फिट नहीं हो रही थी, एंड वी हैव आल्सो सीन अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड आल्सो, एज टू एलिमेंट्स showing the similar properties has placed on the one box only. And Newland has made the has also used the fundamental property as the atomic mass. सो फिर बाद में मेंडेलीव आए। तो मेंडेलीव ने एक रिवॉल्यूशनरी रोल प्ले किया, एज ही हैज अरेंज्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और हमने देखा कि मेंडेलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जो कि था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज यूज किए वो एलिमेंट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, और सारे जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के उनके हिसाब से उन्होंने जो एलिमेंट्स थे तो उनको उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया। सो मेंडेलीव के बाद जैसे कि उनके कुछ डीमेरिट्स भी निकले, मेरिट्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे। तो मेरिट क्या थे कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स रिवाइज किए गए, जैसे कि बेरिलियम का जो 14.09 तो उसको 9.4 जो कि करेक्ट था, तो बेरिलियम को बोरॉन से पहले प्लेस किया गया। Then Mendeleev has also predicted the properties and the left the boxes for the elements. That was the Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon. और उनके एटॉमिक मासेस भी उन्होंने प्रिडिक्ट किए थे। और जब फ्यूचर में वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीन एलिमेंट्स ने वहां पर उस प्रॉपर जगह उसके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेंडेलीव ने बनाई थी। सो देयर वाज नो प्लेस टू रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का एक प्रॉब्लम था, तो मेंडेलीव ने एक जीरो ग्रुप बनाया और जिसमें सारे नोबल गैसेस फिट हो गए। But demerits were also of the Mendeleev's periodic table, as the whole atomic mass, that is the cobalt and nickel, are the two elements. So there was the element ambiguity regarding their Mendeleev's periodic table. तो उनका एटॉमिक मास जो यानी जो आइसोटोप्स है तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। दिस वाज द डिमेरिट। देन आइसोटोप्स का एक चैलेंज था। दे आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स दैट आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो मास नंबर के हिसाब से एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, rise in the atomic mass appear not to be uniform. मतलब जो एलिमेंट्स एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए गए थे तो उनका मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में जब फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे तो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कितने एलिमेंट्स बीच में डिस्कवर्ड हो सकते हैं, तो उनको कैसे अरेंज करना है। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ द Mendeleev's periodic table. Then the position of the hydrogen, as hydrogen was showing the similarity with the halogen also and with the alkali metals also. So there was an ambiguity regarding the position and the placing of the hydrogen. तो हाइड्रोजन कहाँ प्लेस करना है, that was also one of the challenge in the front of the Mendeleev. So these were all the demerits and the merits of the Mendeleev's periodic table. और आगे हम देख रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जब हेनरी मुसले ने जब एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर्ड विद द एटॉमिक मास नंबर, तो इनके बारे इसके बारे में
जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, तो इन्होंने इसके बारे में सोचा एंड दे कंसिडर्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। अब तक जब हमने देखा कि डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, इन सभी ने जो एटॉमिक का मतलब जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। और जब हेनरी मुसले ने एक्सपेरिमेंट करके 1930 में जब एक्स-रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो उसके हिसाब से जब साइंटिस्ट को पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, so they have proposed the modern periodic law, and that was properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। तो यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में देख चुके थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। So the classification of the elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order of their atomic numbers। तो अभी जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जो कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज के जमाने में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज हम करते हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स है तो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए। The properties of the elements can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table. Formed on the basis of the atomic number, the modern periodic table is also called as the long form of the periodic table, and the modern periodic table is also called as the long form of the periodic table. In the modern periodic table, the elements are arranged in accordance with their atomic numbers. As a result, most of the drawbacks of the Mendeleev's periodic table appear to be removed, और जो मेंडेलियस के जो पीरियोडिक टेबल के जो डिमेरिट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गए। However, the ambiguity about the position of the hydrogen is not removed even in the modern periodic table। और एक जो डिमेरिट हमने देखा था, that it was regarding with the position and the placing of the hydrogen in the periodic table, as hydrogen was showing the similarity with the uh, halogens also and the alkali metals also. So there was again the ambiguity regarding the placing of the hydrogen in the modern periodic table also. So we have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which electrons are distributed in the shells around the nucleus, is determined by the total number of electrons in it, and the total number of electrons in an atom is same as the atomic number। तो जैसा कि हमने लोअर क्लासेस यानी कि 8 9 स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम का, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हैविंग, जैसा कि हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था, एटम कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। So the electrons are also the number of the electrons and the number of protons constitute to form the atomic number। So the relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen in the modern periodic table। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें क्लियरली विजिबल होता है। तो कैसे देखते हैं आप। So the structure of the modern periodic table. The modern periodic table contains 7 horizontal rows। तो modern periodic table का जो structure है तो उसमें 7 horizontal rows है जिसे हम periods कहते हैं। यानी 1 to 7 जो horizontal rows है वो periods हो गए। और similarly the 18 vertical columns in this table are groups 1 to 18। 18 ग्रुप्स है। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स उसके ग्रुप्स है। The arrangement of the periods and the groups results in the formation of the boxes। The atomic numbers are serially indicated in the upper part of these boxes। Each box corresponds to the place for one element। मतलब एक बॉक्स एक एलिमेंट की प्लेस ऑक्यूपाई करता है। Apart from these 7 rows, the 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table। These are called as the lanthanide series and actinide series। एक बार देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। So as we can see here, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है जो कि हॉरिजॉन्टल है तो ये हो गए पीरियड्स। एंड ये जो 18 जो वर्टिकल कॉलम्स है तो ये 18 1 से लेके यहाँ पर 18 तक ये हो गए ग्रुप्स। एंड नीचे जो दो रोज है दैट शोज द ए ब्लॉक, दैट इज द लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। So here, apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table, and these result
these are called as lanthanide series and actinide series respectively. These are the 118 boxes in the periodic table, including two series. It means that there are 118 places for the elements in the modern periodic table. Very recently, formation of a few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. मतलब जब अब तक 118 elements जो discovered हो चुके हैं, so all the 118 elements are arranged properly in the modern periodic table. So the entire periodic table is divided into the four blocks, that is S block, P block, D block and F block. So the entire periodic table जो कि modern periodic table है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है. That here we can see that S block, here we can see P block, here is the D block and here is the F block. So uh, the S block contains the group 1 and 2. The group 13 to 18 constitute the P block. Group 3 to 12 constitute the D block, while the lanthanide and actinide series are at the bottom form the F block. The D block elements are called as the transition elements. So जो ये यहाँ पर D block के जो elements है, तो इनको transition elements यहाँ पर कहा गया है. Then uh, So यहाँ पर D block elements are called as the transition elements. A zigzag line can be drawn in the periodic table of the in the P block of the periodic table. The three traditional types of the elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of the zigzag line. The metalloid elements lie along the border of the zigzag line. All the metals lie on the left side of the zigzag line, while all the non-metals lie on the right side. So here we can see that एक जो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, आई विल शो यू. सो यहाँ पर जो ये zigzag लाइन यहाँ पर हम देख सकते हैं that this is the zigzag line which is talking about. So ये जो zigzag लाइन है, तो ये zigzag लाइन के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, the the three traditional types of elements can be clearly shown in the periodic table. Zigzag line, the metalloid elements lie along the border of the zigzag line. All the metals lie on the left side and all the of the zigzag line, while all the non-metals lie on the right hand side. मतलब ये जो zigzag line है, तो इसके along जो border है, तो यहाँ पर सारे metalloids है. और अगर लेफ्ट साइड में हम देखें, यानी लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, तो लेफ्ट साइड में सारे जो है मेटल्स है, और राइट साइड में अगर हम देखें तो सारे नॉन मेटल्स. तो ये है मेटल्स और यहाँ पर है नॉन मेटल्स. तो चलिए आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो कैसे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे मतलब रिलेशन है. सो विद इन अ पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज व्हाइल डिस्टेंट एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन द प्रॉपर्टीज. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज. सो जो एलिमेंट्स है जो कि सिमिलर ग्रुप में है, जैसा कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. These are all the elements which are in the same group, that is the group number one, showing the similar properties. ऐसा यहाँ पर कहा गया है. Then these characteristics of the groups and the periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements. It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed. मतलब जो electronic configuration अगर हम इन सारे elements का अगर देखें, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ तो भी सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से ये एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए. सो तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सब हमें आगे देखना है. सो यहाँ पर हमें कुछ पूछा गया था, यूज योर ब्रेन पावर. पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द कोबाल्ट and nickel in the Mendeleev's periodic table resolved in the modern periodic table? How did the position of the fluorine get fixed in the modern periodic table? Can there be an element with the atomic mass 53 or 54 in between the two elements, that is the chromium and manganese? What do you think? Should hydrogen be placed in the group 17 of the halogens or group 1 of the alkali metals in the modern periodic table? These are all the questions which are asked here, and we have to use our brain to answer all these questions. So
इन सब चीजों के बारे में हम आगे देखने ही वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं characteristics of the groups and the periods. The characteristics of the groups and the periods in the periodic table are understood by comparison of the properties of the elements. मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एलिमेंट्स को जो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, जो पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया, दैट वाज अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. Various properties of the elements in a group shows the similarity and the gradation. However, the properties of the elements change slowly while going from the one end to the other. For example, from the left to the right in a particular periodic table. सो पर्टिकुलर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में, जब हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जब हम पीरियड पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर ट्रेवल्स करते हैं, तो वी कैन एबल टू सी द सिमिलैरिटी एंड द ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो देखते हैं groups and electronic configuration. So go through the modern periodic table 2.7 and write the names one below the other of the elements of the group 1. Write the electronic configuration of the first four elements in this group. Which similarity do you find in their configuration? How many valence electrons are there in such of these elements? So उन्होंने कहा गया है कि हमें जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है, सो जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है, यानी ये जो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. सो उन्होंने कहा है कि हमें इन सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, एंड वी हैव टू सी दैट व्हाट मतलब क्या सिमिलैरिटी है कि जिसकी वजह से वो सब ग्रुप वन में क्लासिफाई किए गए हैं. सो दैट सिमिलैरिटी वी हैव टू सी. और जब हम देखते हैं, सो these are all having the one valence electron at in their ultimate shell. मतलब जो उनकी वैलेंस शेल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. That's why they are classified as in the group one. So you will find that the number of valence electron in all these elements from the group 1, that is the family of the alkali metals. So these are all having the alkali metals. मतलब जो S block का जो group 1 का जो elements है, that all the elements are called as the alkali metals is the same. Similarly, if you look at the elements from any other group, you will find the number of their valence electrons to be the same. मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने बोला, सबके जो अगर हम जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, तो उसके जो हम इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेंगे, तो वो सारे वन है. That's why they are classified as the group one elements. So आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू द ग्रुप टू. बराबर. सो दैट इज द फैमिली ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल. मतलब ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, और ग्रुप वन के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स. So these are the two electrons in their outermost shell. So similarly, there are the several electrons in the outermost shell of the elements such as the fluorine, chlorine of the group 17, the family of the halogen. Group 17 के जो elements है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 17 group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine. So these are all having the 7 electrons in their valence shell. So due to this, they are classified in the group 17. So while going from the top to bottom within a group, one electronic shell gets added at a time. मतलब जैसे कि हम ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे, यानी जैसे हम नीचे ग्रुप में जाते जाएंगे, वन शेल गेट्स एडेड, तो एक एक शेल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो बढ़ती चली जाती है. So however as we go down a group, the number of the shells goes on increasing. So this we have seen. Do you know uranium has the atomic number of 92? All the elements beyond uranium with atomic number 93 to 118 are man-made. मतलब जो 93 से लेके, कहाँ है 93, तो यहाँ पर जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, that is the 92 uranium, 93 neptunium. So here we can see that 93 to 118 elements are man-made. All these elements are radioactive and unstable and has a very short life. So as we can see here, the उन्होंने कहा है कि जो 92 से यूरेनियम has the atomic number of 92, तो 93
With atomic number 93 to 118, all the elements are the man-made, and these elements are the radioactive and unstable. The radioactive elements, as we know, that radioactive elements are the elements they show releases the radiation. So in the periodic modern periodic table, elements are arranged in an increasing order of their atomic number. ये बात clear हो गई. Vertical columns are called as the group. There are the 18 groups. The chemical properties of the elements in the same group shows the similarity and gradation. Horizontal rows are called as the periods. There are the 7 periods. The properties of the element change slowly from one end to the other in a period. ये सारी चीजें हमने यहाँ पर periodic table में देख ली. सो पीरियड्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो पीरियड्स में कैसे चेंज है, वेरिएशन है, वो भी हम देखते हैं. On going from the through the modern periodic table, it is seen that elements lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon belong to the period 2. Write down the electronic configuration of all of them. वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला गया है. इज द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स? इज द नंबर ऑफ द शेल्स द सेम इन दिस केस? ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पूछी गई. You will find that the number of the valence electrons is different in these elements. However, the number of shells is the same. मतलब जब हम यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम, बेरियम, चलिए यहाँ पर पीरियड 2 देखते हैं. लिथियम, बेरियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8. So यहाँ पर हम जब देखते हैं, so we can see that you will find that the number of valence electron is different in this shell. Valence electrons 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6A, 7A, 8A. However, the number of the shells is the same. यहाँ पर दो शेल सभी यहाँ पर दो ही शेल है. जैसा कि हम पीरियड 3 में देख सकते हैं, तो तीन तीन शेल है सभी इसमें. So you will find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by one at a time, and the number of valence electrons also increases by one at a time. जैसा कि हम जब यहाँ पर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जब यहाँ पर जाएंगे, so we can see here that the as lithium having the atomic number 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. So as we can see that the atomic number goes on increasing from the left to right in this table. But here we can see that the valence electron here 1, here 2, here 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this we can see that atomic the valence electron is also getting added one at a time as we go from the left to right in the periodic table. और जो कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ते चला जा रहा है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है पोटेशियम एटम और आर्गन एटम का. We can say that elements with the same number of the shells occupied the electrons belong to the same period. The elements in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, have electrons in the two shells K and L. जैसा कि हमने देखा है कि shells are arranged as K, L, M, and N. एक बात वो हम देख लेते हैं. One thing that is uh, we have to see here. So firstly the shell is K, then L, then M, and N. So this we call as the shell number. Shell. और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी एनर्जी लेवल्स. सो एनर्जी लेवल्स क्या है? S, P, D, and F. So SPDF are the energy levels और KLMN जो है वो shell है. So as we can see here that the uh, elements in the second period, that is the lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, and neon, have the electrons in the two shells, that is the K and the L. Elements in the third period KLM में है. Write down the electron configuration of these elements and confirm. तो आप ये कर सकते हैं, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं whether they are having the electrons in the K, L, and M the M shell. That we can confirm and check.
In the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along a period from the left to right. And the beginning of the next period, a new electron starts filling up. The number of elements in the first three periods is determined by the electron capacity of the shells and the law of electron octet. So, can you recall me, पूछा गया है, what are the values of the n for the shells KL and M, KL and M? What is the maximum number of electrons that can be accommodated in each shell? Write the formula. Deduce the maximum electron capacity of the shells KL and M that we are going to see here. As per the electron holding capacity of the shell, two elements are present in the first period and eight elements in the second period. The third period also contains only eight elements. Due to the law of electron octet, there are few more factors which control the filling of the electrons in the subsequent periods, which will be considered in the next standard that we will be seeing in the further higher classes. बट एक जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ पर हमें दिया गया है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम के शेल में डाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एल में डालने चाहिए, कितने एम में, कितने एन में. That is already fixed. So as per the according to the n value, suppose we are having here the k value as the n, l value 2, m3 and n4. So we are having the formula that is the electron holding capacity formula, that is 2n square. So K will having the 2 multiplied by 1 square, that is 2 electrons, then 8 electrons, then 18 electrons, then 32 electrons. These are all the electron holding capacity as we can see here. This also we have to remember as this is also important as with this perspective of the exams and all. So the chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it and the shell number of the valence shell. The information on these points is obtained from the position of the element in the periodic table. That is, the modern periodic table has proved useful for the study of the elements. So, due to all these electronic configuration we have considered here, we have also considered that the atomic number is the more fundamental property for the classification of the elements in the periodic table. And we have studied that all the 118 elements are properly classified in the modern periodic table, as modern periodic law only states that modern properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. Properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. This all we have seen here. So आगे हम देखते हैं कि periodic trends in the modern periodic table. तो क्या periodic trends आते हैं? When the properties of the elements in the period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. तो क्या variation आ गए? क्या हमने क्या देखा? It is called the periodic trends in the modern periodic table. In this standard, we are going to consider the periodic trends in the only three properties, namely valency, atomic size, and metallic and non-metallic character. अभी इस स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ यहाँ पर वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में ही पीरियोडिक ट्रेंड्स जो ऑब्जर्व हुए हैं उनके बारे में देखना है. So valency क्या है? You have learned in the previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom, that is the valence electron. मतलब जो कि हमने देखा था पिछले स्टैंडर्ड तक कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. तो ये जो होती है जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है दैट इज द वैलेंस शेल. और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, that is the one electron only present in the valence shell of this uh, atom, that element, that is the potassium. So what is the relationship between the electronic configuration of an element and its valency? The atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of 2 and reduce their valency from the same. These are all the questions which you can read and think about it also and try to answer that questions also. So later we will see about all the metallic, non-metallic characters and all periodic trends which we can observe in this. So that we will cover in the further part. Till if you have any doubt regarding with all this, what we have studied, you can comment.
Otherwise, we will be going to see about the next part in the next video. So एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या अब तक पढ़ा है. So we have today seen about the modern periodic table, that is the long form of the periodic table. तो कैसे modern periodic table ने ज़्यादा help किया for the classification of the elements that we have seen here. So modern periodic table का हमने structure देखा जिसमें जो periods थे वो 1 to 7 है, 18 groups है 1 to 18 and चार blocks में classify किया गया है S block, P block, D block and F block. तो 118 elements में जो कि अभी हम periodic table से ही देखते हैं. यहाँ पर एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक. एस ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट है उनको हमने अल्कली मेटल्स बोला है. जो एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है. डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. 18 ग्रुप जो है वो नोबेल गैसेस है. और यहाँ पर एफ ब्लॉक में जो लास्ट टू सीरीज है दैट इज द लेंथ एंड एक्टिनाइड सीरीज है. और हमने आगे देखा कि ऑल द 118 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड प्रॉपर्ली इन दिस as atomic number has taken as the fundamental property for the classification of the modern periodic table. So all the elements are arranged properly in this modern periodic table. And we have also seen that from the 94 to 118 all the elements are the radioactive, that they emit is the emission, that radioactivity is the fundamental property for the radioactive elements. And we have also studied about the electronic configuration and the variation or the trends observed as why the elements are classified into the groups and the periods as showing the similarity with the electronic configuration, that is the valence electron present in the outermost shell. And we have also studied about the shell numbering and the number of electrons capacity that the particular shell can hold. We have also studied about the valency of the electron, that the number of electrons present in the outermost shell of a particular element, that is the valency of that particular element. And we are going to see about the periodic trends, that is the atomic size. Then we are going to see about the metallic and the non-metallic character, and also about the gradation in the halogen family and all in the further part. So now let's stop here. Thank you.